Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say महानता कभी गिरने में नहीं है दोस्तों, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरें देखते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर एज अ पॉलिसी, मोदी। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग, व्हाट इज टेरर फाइनेंसिंग, कंसर्न्स, चैलेंजेस एंड एफर्ट्स टू हैंडल देम। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट सर्टेन कंट्रीज ऑफर पॉलिटिकल, ideological and financial support to terror groups, and sometimes there is indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists, right? Our next important headline is Punjab government node for old pension scheme. It is available on page number 1 और ये related है paper 2 social justice से। In this article, we have to know about old pension scheme and how is it different from the national pension system. तो friends, इसको भी हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है। लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। Why is it in the news now? क्योंकि पंजाब कैबिनेट gave approval to the notification for implementing the old pension scheme in the state, right? Next important headline is Draft Digital Data Protection Bill tabled for comments. It is available on page number 1 और ये related है paper 2 government policies and interventions से। In this article, we have to know what are the key features and objectives of the Digital Personal Data Protection Bill 2022. So friends, bill proposes a hefty increase in penalty amounts up to 500 crore while also easing rules on cross-border data flows in a big relief to large tech firms. Bill also gives the power to the government to offer exemptions from its provisions in the interest of sovereignty and integrity of India and to maintain public order, right? Our next important headline is India's first private rocket lifts off from ISRO spaceport. It is available on page number 5 और ये related है paper 3 space section से। In this article, we have to know about the Vikram S and significance of the launch of Vikram S. दोस्तों, इससे रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक यू नो कि कहां मिलेगा, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एंड इट इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई हु इज द फादर ऑफ कंट्री स्पेस प्रोग्राम, राइट? Our next important headline is Sweet Not Protein in Bamboo Fruits Triggers Rat Boom. It is available on page number 5 और ये related है paper 3 environment section से। In this article, we have to know about Melicana baxifera. So friends, it is a tropical bamboo species and it has long intrigued researchers for its association with the occurrence of bamboo death, rat floods and famines in northeast India. One more thing, it is the largest fruit producing bamboo and it is native to northeast India, Myanmar region, right? Our next important headline is The governor is under constitution, not above it. It is available on page number 6 और ये related है paper 2 parliament and state legislature से। In this article, we have to know about role and the power and the duties of the governor, controversies related to the office of governor, issues and conclusion. तो friends, इससे related content हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और YouTube चैनल पे भी इसको कवर किया गया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू दम। उसके अलावा यहाँ भी कुछ अच्छे पॉइंट्स गिवन है तो आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें तो आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, राइट? Our next important headline is Yes, the Indian Air Force needs a new doctrine. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 defense section से। In this article, we have to know about the roles and missions of the Indian Air Force. Does Indian Air Force need a revised doctrine to help it navigate ahead? तो friends, बहुत शानदार तरीके से इन points को यहाँ पे cover किया गया है। अगर हम overview देखें तो it is the time that doctrine of the Indian Air Force is reviewed and made public to guide the future developments and applications of India's air power, right? Our next important headline is India and Russia agree to deepen cooperation on counter-terrorism at UN. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 international relations से। In this article, we have to know about recent developments in India-Russia relations. तो friends, recently India-Russia agreed to deepen cooperation on counter-terrorism issues and enhance bilateral coordination at the United Nations, right? Our next and last important headline is Boost investments in smart tech, AIIB urged. It is available on page number 12 और ये related है paper 3 economy section से। In this article, we have to know about Asian Infrastructure Investment Bank. तो friends, recently Union Finance Minister asked the Asian Infrastructure Investment Bank to scale up investment in renewable energy and smart technologies and also urged
to set up regional office in India. अगर हम बैंक की बात करें फ्रेंड्स, तो it is the multilateral development lender whose mission is financing the infrastructure for tomorrow with sustainability at its core, right? And India is the founding member of this bank with the second highest voting shares, right? पहला किसका है? चाइना का, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms, right?